मोर महापुरु डोंगर बुढ़ा हसुचन मूल मूल तार पादर तलु पैन बुहे खुल खुल तार पादर तलु पैन बुहे खुल खुल मोर संगा तो पादर तलु पैन। मैं यहाँ से ये खरामाल गांव से मेरे को 1999 से इधर का परिवर्तन देखकर मेरे को छोड़ने लगा। अपना खेती बाड़ी चलता नहीं था, इसलिए खाने के लिए भी कुछ मुसीबत था। इसलिए मैं क्या सोचा कि इधर घर परिवार संभाल नहीं पाएंगे, बोल के मैं बाहर चला गया। मैंने लगभग 10 साल तक मैं बाहर में काम किया हूँ। शीतल पवन बहे शिशुल सुल तार पादर तलु पैन बुहे खुल खुल तार पादर तलु पैन बुहे खुल खुल मोर संगा तो पादर तलु पैन बुहे खुल कोई लोता उसो को साचेर चिरंगुल केते बाघ भालू राखोरा देख बुझे ते कोई लोता उसो को साचेर चिरंगुल केते बाघ भालू। Bargarh district lies in the hinterland of the state of Odisha, dependent on the sparse annual monsoon for survival. Temperatures soar above 45 degrees in summer. Work outdoors becomes unbearable after 10 o'clock each morning. In many houses only the elderly, women, and children remain, as menfolk look for work in faraway towns and cities. It's a hard life. Water for daily use has to be carried from 2 distant streams that flow from the fabled Gandhaman mountain nearby. A 13th century temple at the foot of the hills bears testimony to a thriving settlement in the area since ancient times. मंदिर के जैसे ख्रीष्टाब्दी अच्छे 900 वर्ष मंदिर के हेलान इन बलांगीर राजा ताको ना होचे बोयल दे ताको सपना हैला बस्ती राजा आसे मंदिर बनाले मंदिर प्रतिष्ठा करके महाप्रभु के नाम स्थापन करले। Rise Against Hunger India stands for a world without hunger, and to achieve that we work towards achieving sustainable food security in the communities where food security is a challenge. And we knew this region being drought prone, being cut off, being landlocked, this area was one of those pockets. So we also wanted to find a champion who already has solid grassroots understanding. So we found Mr. Shiva Sahu as our anchor basically on the ground. Shiva Sahu himself is a farmer, he is an activist. He also has a solid skill of mobilizing local communities. The first task was to investigate the cause of crop failures that had trapped farmers in a vicious cycle. नमस्कार सेटा से हमर धान हाइलिंग धान अच्छा अच्छा एटा माने दुकान रो किनिबार पड़ुछ प्रत्येक वर्ष किनि करबा पड़ुछ आज जेन कोजन बंजर हे गला मैट आज जेन कोजन सब खराब हे गला तो 1000 साल आगु लोके केंदा चाष करथले आ केते बढ़िया चाष करथले तो आज हां रही बे तो आज जेन प्रॉब्लम टा हिचे तार जड़ होचे एटा इ तार जेन मूल कारण है इटा है इ बिहनटा जेन दिनो आसला से दिनो तामको सार आसला से दिनो विष दबा पड़ला जमीन रे से दिनो बेसी पानी भी इटा खाउचे एवं जेते बेले क्लाइमेट टिके परिवर्तन हो जाउचे चेंज हो जाउचे सेते बेले सब खत्म हो जाउचे से वर्ष कारण लागि ही आज हमर जेन माटी खराब होचे आ इ बिहनटा हमर क्लाइमेट लागि सूट बिल्कुल नै छै इ प्राकृतिक एनवायरनमेंट लागि बिल्कुल एटा बिल्कुल सूटेबल नै छै एटा हमर माटी लागि भी नै छै हमर शरीर लागि भी नै छै। Desire for quick profit drove most farmers to abandon the native seeds and shift to genetically modified high-yield varieties. Now, after repeated crop failures, the farmers were falling into debt. Since the seeds from high-yield crops could not be planted again, farmers had to spend more every year to buy more seeds, fertilizers and pesticides, adding to the financial burden. In one of the first field trips, Siba Sahu revealed shocking evidence of how the paddy plants had adapted to the degradation of soil by use of chemical fertilizers. फर्टिलाइजर जे नहीं छे केमिकल फर्टिलाइजर सेटा दे दे के माटी टाणे हो जाउछे
भीतर के आउ पानी नहीं पशुआ से लगी जल्दी सुखा जाए वर्षा पानी क्या हो पलि जाऊँ पूरा ना होता है सुखी जाता पूरा नमी रहा कथा ये टाइम रे इना जेन माइक्रो ऑर्गेनिजम मान रहा कथा जेन केंचुआ रहा कथा कि घुली कि कंकड़ा रहा कथा से मैंने जेहेतु सब मरी जाऊन पानीटा जेन वर्षा हो नीचा के नहीं जबार तो जेहेतु नीचा के पानी नहीं चेर भी ऊपर ऊपर रोचे एवं जेन फर्टिलाइजर रे इटा खाली बढ़ी छे माने जेन खाद्य खाली फर्टिलाइजर खाउ फर्टिलाइजर आ केमिकल खाउ माटी भीतर जेन ओरिजिनल डायबार कथा जेन नेचुरली जेन न्यूट्रिएंट माने आबार कथा जेन खाद्य रे सेटा नहीं There was a sense of growing concern. Many villagers had observed the arrival of new ailments which were rarely known in the community before. रुकी जाऊला आमर छुआ मैंने जानी नहीं पारुथिने कि आमे भी नहीं जानुथी आमके आरु आरु नुआ नुआ बेमार मने घड़ी बसुचे आमे कूद छाड़ी देनु मड़िया छाड़ी देनु जेनटा आमे पतरे पिठा करूथिनु सेटा भी भूली गनु एबे लोग मने तेल ती छानी कर खाउछन हेति लागी एसटी बढ़ी जाउसे कोरोना रोग होउचे तमर कैंसर ही जाउसे कूद मड़िया के छाड़ी देनु जे After conducting research as well as extensive discussions with community members, we realized that we have to find indigenous solution, and one of those solutions was seeds, indigenous seeds, and which is called otherwise desi seeds. The desi seeds had evolved in this climate through centuries of cultivation. These are hardy and are drought resilient, requiring much less water to grow. They are also more nutritious and averse to diseases and weeds that usually plague high-yield varieties. Falling into disuse, the seeds which used to be hoarded by farmers had now nearly disappeared. तो पहला जो हम सीड कलेक्शन किए तो पहला हमारे पास 7 वेराइटी हमको मिला तो फिर हम सब जो टीम थे हमारा वहीं का सब लग गए हमारा जो विलेज लीडर है अपना जो फ्रेंड है अपना जो रिश्तेदार सब जगह खोजने लगे. With support from Rise Against Hunger India, teams went door to door in search of these lost varieties. In the first 2 years of consistent effort, 150 varieties were recovered. These seeds were then planted and multiplied. 2 वेराइटी का जो पोलिनेशन होता है ना आसपास में वो क्रॉस होके नया वेराइटी निकलता है. वो जो नया वेराइटी निकलता है उसको 3-4 साल टेस्ट करना पड़ता है. वो देखें कि उसका गुण फिर परिवर्तन ना हो जाए. जहाँ पर स्टेबल होता है इसको हम चूज करके फिर किसान के देते हैं. A seed bank was set up at Gaizalit where farmers could buy them. सब अलग अलग वेराइटी रहे पाखापाखि 200 वेराइटी धान आम ठाने अच्छे है जेनता लाल धान एटा जेनता सेंटेडटा माने हूँ आम कला धान कला चाउल बाहरी एटा रेती देमा जदि आम बोले कला चाउल एटा धान ना हूँ कृष्णा चोल देखे देना चोल देखे रेती दे रेती देना चलो ही जो चाउल यानी इधर बाहर हूँ 150 टका केजी आम एटा 100 टका केजी रे बिकसु. छुआ बेले मुई देखी ये देसी बिहन थेला हेला सब हजी हेला इहादे देसी बिहन देखी करी जेन खुश लगुचे आज है मुझे फिर चाष कर में आज पत्ते बिहन हो बहुत मत खुशी लागला. इसके बाद फिर शुरू किए कि वेजिटेबल का वो मिलेट का वो तिलन का फिर दलहन का और आज आप देखिए कि सब मिला के हमारे पास 400 वेराइटी इंडिजिनियस वेराइटी है और बहुत ऐसा रेयर वेराइटी तो कहाँ भी नहीं मिलेगा आपको. हम सिर्फ हमारे पास ही है. These seeds are rich in nutrients and rich in diversity, very tasty. That in the cities there is demand for these seeds. Many nutritionists and dietitians they are recommending because of the nutrient quality. The most significant economic impact of desi seeds is that it costs far less to cultivate. The farmer needs to buy them just once and can store seeds from their own harvest for the next year. The time had come to create awareness about the success of desi seeds. A seed festival was organized
by Rise Against Hunger India to attract more farmers to the movement. The houses of Karamal village were decorated with specially designed seed ornamentation. More than 5,000 villagers turned up, each with their own dance troupe. Special prayers were offered to the local deities to bless the seeds for the next harvest. These were then carried from door to door in the village. At each home, the lady of the house welcomed the procession and prayed for a bountiful crop. The celebration lasted all day. The Seed Festival inspired many farmers to return to Desi seeds once again. Even parboiled rice, once a staple food across eastern India, has regained their popularity in the past few years. The most poignant evidence of this transformation is the rice mundi, operated by the state government. Here, Desi varieties command a significant portion of the sales. देसी सीड आ रहा है 4-5 प्रकार का जो सरना बोल रहे हैं लाल टाइप का धान, वो वाइट धान जो 1010, 1015 ऐसे जो धान है सिल्की, इस टाइप का धान प्राय आ रहा है सर मंडी में। डिमांड के हिसाब से इसे चाष भी कर रहे हैं लोग। A second line of effort had already begun in earnest, organic and natural farming, to restore the carbon and mineral content of the soil. Trained teams met with farmers, assisting them to set up compost and permaculture units of their own. खत भी मिसेक दे परमा में एंता जिंदा खत हे जीवा आमे एटा खत हेगला एटा रेडी हे गला हमर केचुआ छाड़बार लागि आमे इथिरे केचुआ छाड़ी परमा इथिरे छाड़ी परमा आर एटा सब केचुआ खाई करी एटा जेते काम आता सोच कुहिले तार 10 गुण भल करबे. Organic farming has been the most sustainable form of agriculture. What has been most unique in Western Odisha is the use of indigenous knowledge of flora to create natural alternatives for fertilizers and pesticides. हम लोगों को गांव-गांव में जाके यही सिखाते हैं कि वो खुद कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो या कंपोस्ट हो बना सकते हैं और अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं. तो इसमें से बहुत सारे गांव में हम लोग जो काम कर रहे हैं, जंगल में जो मिलता है पत्तियाँ, गांव का गोबर, गाय का यूरिन, वो सबको कैसे कलेक्शन करके वो खुद बना पाएंगे, उसी में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं. तो आज हमें बीजामृत बनामा तो बीजामृत बनाले कारण है कि जिते बेले आमे भी बिहन पोल्हा पकाउछुँ कि खेते बुनुछुँ तो सेटा माटीरू जेन रोग पोक कि कीड़ा लागी जैसन बिहन के सेटा नहीं लगे से बोली आमे जी हमें बीजामृत बनामा. तो इसलिए हम लोगों की प्रयास है कि कैसे वो लोग खुद घर में बिना खर्चे में बना सकते हैं दवाई वगैरह, उसी में ही हम लोग काम कर रहे हैं. The most challenging aspects of the proposal was that the fields would require 3 to 4 years to recover before the farmers could expect a bountiful harvest. So we stepped in both to provide the seed capital to create vermicompost, create permaculture, create organic composting and organic manure, pesticides. We also compensated farmer in other ways, like buying back their product, by helping them reclaim their land. We have compensated them in a way that they are not feeling that loss. Along with paddy, Rise Against Hunger India encouraged revival of many indigenous varieties of vegetables. These varieties had not been seen for decades. मैं तो आगो सार देकर बदली जाइला ताको मुई गरु खत तापर जिया सार तापर आम कीटनाशक कंपोस्ट खत दे करी मुई जगह टाके बदले कर ऑर्गेनिक हिसाब रे
चाष करी आसुचे मोर सार खर्चा पहुँची जाऊे जैविक पद्धति रे जेनटा करूँ आमे निजे ही पे पारुँ माने लाभटा आमको एथिरे मोर परिवार 5टा अच्छु एथिरे मुई परिपोषण करी नौचे। As more farmers took up organic farming with Desi seeds, the increase in profits took them by surprise. It also set an unexpected trend of reverse migration in the region. मेरे को बाहर में जब मैं थे तो सुनने के लिए मेरे को मिला ऐसा कि गांव वाले देसी बिहन ऑर्गेनिक के लिए देसी बिहन का खेती कर रहे हैं बोल के सुनने के लिए जब तो मिला तो मैं सोचा कि चलो मैं भी उधर खेती बाड़ी करूँगा देसी के लिए ऑर्गेनिक करूँगा बोल के मैं चला आया। Ishwar proudly shows off his organic fields, which he has created with locally sourced fertilizers and indigenous know-how. Today, his little plantation is thriving and is a source of regular income for the family. मेरा तो कुछ खरीदने वाला मेडिसिन कुछ लगा हुआ नहीं है, आपको उसमें महंगे से भी बेच सकते हैं। वो लोग समझ लो कि 15 रुपया किलो बेच रहे हैं तो हमारा 20 रुपया 5 रुपया ज़्यादा से बेचते हैं। टमाटर क्या मार्केट से लाओगे तो साला हफ्ता भर रहते हैं तो अपना टमाटर हफ्ता भर रख नहीं पाओगे, गीला हो जाएगा, सड़ जाएगा। वो क्योंकि कच्चा वाला के लेकर वो केमिकल में डाल के उसको उबाल के रखते हैं, पक्का जैसा दिखेगा, पकाओगे तो पकेगा भी नहीं। अपना ऐसा नहीं, टमाटर खट्टा रहना चाहिए ना, खट्टा ही लगना चाहिए। अभी का टमाटर कैसा लगता है, मीठे पूरा सेव जैसे। अपना टमाटर ऐसा नहीं लगेगा। कम जमी भावुँ कम जमी के बेसी फायदा कर पारमा सेटा सब बुद्धि मन भी हमको खोजबाक पड़वा। Encouraged by the success of organic farming, Rise Against Hunger India decided to scale up Ahimsa's efforts by supporting farmer-producer companies. Here, farmers could share expertise and even their daily challenges and support one another. लाल चाउल बाहर जी से धान के घिनबार नहीं भी किए पसंद नहीं करवा मंडी रे भी बोले से चाउल के तने केनता करी हेबा आरो घरे भल करी परिष्कार हिसाब बनामा आउ चाउल बिकमा जदि नहीं बिकी पार हमर कंपनी के देमा कंपनी तो नेबे लोग किणिगिरी बा जेनटा पोग लागी जे तले जेन झाला लगवार लागे सेत की लागे हमको ट्रेनिंग दरकार, ड्राम गुटे दरकार, उसो मारबार ड्राम दरकार, हमको टिके टिके जुगाबार लागे साहाय्य काना मिलवा के बोल करी अपन को इटा बुझी। As word spread, about 200 farmers joined across 5 collectives in 2016. The numbers grew with each passing year to include 5,000 farmers. Rise Against Hunger India donated various agricultural machinery and equipment to be used as a shared resource, enabling faster processing of produce to make them market ready. आमे सब बिहन पाचर जिनिस पदर सब मुग मड़िया डाली एटा माने सब जागिर जहाँ कि मेसीन माने आम नहीं आसिक ठाने अच्छे सब प्रत्येक मेसीन आम जदि मेसीन मन को जो पिसई आने आम बिना पैसा भी नहीं लगे आम मेसीन निजे निजे आम कम से पिसई देमु। In the midst of these hopeful events, a tragedy struck the region. In 2015, Bargarh district had already suffered from a dry spell. In 2016, a severe drought blighted the landscape. All water sources dried up. People suffered from heat strokes. Animals were falling dead on the fields and dry barren farmlands everywhere. छेल पड़द से रखी थी जे पानी ने कहीं ने खरार लगी गस्तल से गस्तल पड़ी थे पानी कहीं लगे दीपट मरी गले और सब तो 7-8 वर्ष कथा कहूँ। It was a serious problem. We were called for action immediately. In consultation with the volunteers, we immediately mounted an emergency response program. We sanctioned funds. Regular streams you will see, animals would go there and they will be able to drink water. Because it was all dried, main thing was required was to dig out those, deepen those shallow water points or construct some down the stream. In all the villages, and the traditional knowledge came to our rescue because they knew which points cows and animals actually go. So it was not like a big research. We instantly were able to do within maybe 2 weeks.
we were able to create these artificial ponds, chahlas. Preempting another recurrence of drought, over the next 3 years, between 55 to 60 ponds were dug across the region. Large-scale tragedy was averted. About 29,000 cattle and other animals survived on water from these shahalas, or water points. About 85,000 people used the water for bathing and washing. In 2017, the drought conditions returned. Death due to heat strokes spread across the region, as well as the whole country. Rise Against Hunger India sponsored Jal Chatras, or drinking water points, across villages and travelling routes. For added relief against dehydration, glucose was mixed with clean chlorinated water and served to all. सोचे कि लोगों के ब्लड शुगर होगा और फिर पानी पी लेंगे तो लोगों को तो पता नहीं है, तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा बीमारी हो जाएंगे। इसीलिए गांव-गांव में क्या किया कि हम राइज अगेंस्ट हंगर के सपोर्ट से हेल्थ कैंप किया। वो सारे बीमारियां का जो जड़ है उनको पता चला, लोगों को क्या मेडिसिन भी फ्री में दे दिया, और जिसको ब्लड शुगर है उनको बोले कि वो ग्लूकोन डी पानी नहीं पिए। The operation was conducted on a massive scale. Over 80 tons of glucose packets were served to the poor in 150 villages, saving hundreds of lives. 135,000 litres of water was chlorinated and served to 260,000 people. Women's groups were trained to filter and boil water for drinking. The most awaited monsoon of 2017 brought an end to the suffering. Life began to return to normal once again. By this time, another movement was taking shape. Millets had always been a staple food in the hinterland. Full of protein, nutrients, and fiber, while being low on carbohydrates, millets have a cooling effect on the body during summer. But, as with desi seeds, millets had been relegated to the background. As more nutritionists recommended millets as one of nature's superfoods, market for millets picked up. Governments began to promote cultivation and even offered 2,000 rupees per farmer for growing the crop. इसको ये सब छरते हैं, पीट कर बाड़ी से पीटते हैं, इसको ढेंकी से लगाएंगे तो इसका दाना सफाई से लाल हो जाएंगे। मिलेट तो लोग पहले से कर रहे थे और बीच में बिल्कुल छोड़ दिए थे। इसका कारण है कि ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की मैन्युअली जो करते थे बहुत उसमें दिक्कत है और बहुत ट्रेजेडी है। महिलाएं कूटेंगे, 1 दिन कूटेंगे, 2 दिन कूटेंगे तो 3-4 दिन का खाना मिलेगा उनको। ये इतना डिफ़िकल्ट है उसका प्रोसेसिंग। और हार्वेस्टिंग करेंगे हाथ में तोड़ के, फिर उसको कूट के ढिंकी में निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको डिहस्किंग करेंगे हाथ में, उसको फिर के पाउडर बनाएंगे। हाथ में करते करते बहुत परेशानी है। One of the major challenges for them was the drudgery or the time consumed in harvesting, processing. Based on the demand of the farmers, we provided them machines, harvesting machine, dehusking machine, polishing machine, and the grinding machine. That reduced what was taking months for the farmers to few hours. Then convincing farmers, adoption was easier for farmers. They could see that it has reduced their drudgery. The scale up was much faster after that. Millet farming had reduced to such an extent that many new farmers had to be trained all over again. The lead farmers group traveled from village to village, providing advice and overseeing the first plantations closely. मड़िया जो पैन कम लगुचे और धान जो पैन जह लगसी हेतिले मड़िया करछे टिके ठीक होछि। ई जारे में धान करथले जे 1500-1700 बिक्री होतला क्विंटल प्रति, इरा मड़िया करछे जे 3500 टका बिक्री होय जे बनाइती के जह टिके लाभ होछि। पहला जब हम शुरू के 2016 में मिलेट के,
तो उस टाइम में प्रोडक्शन बहुत कम था फिंगर मिलेट का। प्रोडक्शन था ऐसा जो नॉर्मली होता है 4 कुंटल के अंदर था, 4 कुंटल की ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी जो किसान ने उसका MSP मिला, उसका थोड़ा बाज़ार मिला उनको, तो अभी 1 एकड़ में 12 से 14 कुंटल तक ले रहे हैं। वो अलग अलग टेक्नोलॉजी, वो लाइन सोइंग, SMI प्रणाली, वो अलग अलग तरीका और अलग खाद, उसमें वीडिंग का 2-3 बार करके उसका उपज बढ़ा रहे हैं। तो अभी किसान को भी वो विज्ञान भी पता चल रहा है कि कैसा ज़्यादा उसका उपज होगा। ये सब किसान कर रहे हैं आज। This year, Binjada Pindra and his wife are celebrating a bumper harvest. His newfound success at millet farming has changed his family's fortunes. आप तो बहुत लोग करी हैं। ये बस बहुत लोग करे हैं। किए हैं। और आप तो पैसा भी मिलने वाले हैं तो आओ करेंगे भी। ग्रुप पार्टी करें, हाँ हर गांव में ग्रुप पार्टी है 10 ठी 5 ठी, तो हमारे एकरा 8-9 ठी ग्रुप, तो 100 आदमी हो गए हन, एक ठो ग्रुप बने है। बाकी फसल से मड़िया फसल में एक तो खर्चा कम है। हमारे ये मरूड़ी एरिया है तो शॉर्टेज पानी होने से भी ये मड़िया फसल आ जाते हैं, और उसी के लिए ये एरिया में अभी आगे तो छोड़ देते। मार्केटिंग नहीं था, आगे मंडी नहीं था, तो अभी मंडी हो गया, तो सब चाषी करने के लिए आग्रह किया है। सरकार भी कर दायित्व ले उसमें। तो अभी सुविधा है। सुविधा करते हैं भी। Usually, it would take more than 2 months to process this crop by hand. Today, thanks to the high-capacity dehusking and polishing machines donated by Rise Against Hunger India, the job is completed in merely 5 hours. From all angles, if you see, this is a huge success story. Not only farmers are getting good price, they are consuming it better. Any market they go, I have heard from them that there is always huge demand. But it has also become a lot of commercially good thing for farmers to do. While the new popularity of millet farming was encouraging, it was necessary to convince a wider population about their versatility of use in daily cooking. The next initiative was to spark culinary creativity in the villages themselves. On World Food Day, a food festival was organized by Rise Against Hunger India. Over 5,000 visitors tasted over 80 varieties of delicacies prepared using millets alone. This annual festival gained immediate popularity, thus promoting the revival of millets as a staple food once again. Last October World Food Day, the whole government department was there, and they were not like leading, they were participating. So that's a people's movement. Meanwhile, troubling news started trickling in from Dangbahal and surrounding villages. For years, people had suffered from a mysterious ailment that caused locked joints, kidney failures, physical disability, and even deaths. A recent diagnosis before the death of Raj Kishore Nath's brother had indicated traces of fluoride poisoning. तो जब हम लोग बेंगलोर से वापस आए तो किसी को पता नहीं था, तो वहाँ से जो डॉक्टर के हर्षवर्धन न्यूरो सर्जन डॉक्टर बोले, उसके बाद मुझे भी पता चला कि हमारे गांव में हर नलकुएं में यानी फ्लोराइड पानी है, और वो पीने के बाद यानी जैसे हड्डियाँ को वो पूरा दिमाग जैसे चढ़ जाए, खा जाएगा, और इंसान पूरा खोखला जाएगा और इंसान दुर्बल हो जाएगा। तो ये हर गांव, मतलब गांव के हर ऐसे वो लोग भी अपना जूझ रहे थे, सब ऐसे सड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। सबको फिर पता चल गया, बवाल मच गया गाँव में। Now official investigations had finally confirmed that the groundwater in the region, below 300 feet, was poisoned with heavy presence of fluoride. Siba Sahu, along with some Ahimsa workers,
hurried to the area. Nearly all residents had been affected severely. Many lives had been lost. एरा से भाई भी सेंदे हैला और से जेन जन पड़ी गला पड़ी रहला है पड़ी रही करी से के मरि गला 5-7 बरस जा पड़ला खटे खटे पड़ी थला. The only solution was to bring in piped clean water from Mahanadi River, 50 kilometers away. A project that could only be possible through government intervention. When an NGO is working with the communities, we can't wait for tomorrow's solution and let people suffer today. First thing we did was find somebody who knows what to be done. We were given a solution. 3-layer filters that you could provide to the households that say almost eliminates 90% of the contamination. And we tested it. So all families in that area, we gave them this 3-layer water filter. For washing and household use, Siba Prasad and his team helped to temporarily pipe up water from shallow ponds to an overhead tank for distribution. In the meantime, Rise Against Hunger India and Ahimsa Club volunteers pulled in all their media resources to campaign for river water. Community people were already demanding with the authorities. We just brought journalists, news people and highlighted the situation. Last के बहुत बेसी बढ़ी गला बेले आमे वीडियो निके गलु वीडियो न सेन घेरो कलु सेकंड वीडियो आज्ञा आसले आर हमर से कहबाटा के स्वीकार कली. It was not that the government was not sensitive. Perhaps the planning process was there, but to accelerate the process, together with the villagers, we sat with the government authorities at the block office and we asked for commitment, and they gave some kind of an assurance that this will happen. महानदी पानी जे सप्लाई हेबाटा से मेन पाइप तो सेटा पूरा जाइछे सेतरु जेन हेनु कनेक्शन आइछे याडे गुटे मेन पाइप जाइछे भितरा गुटे एटा स्टॉप लागिछे ए जाइछे सेना गुटे कनेक्शन दिया आइछे तापर एटा मेन पाइप ता पूरा सीधा ना गुटे पड़ा আছে से पड़ा भीतर के भी जाइछे एटा भी तुपा चालीछे प्रत्येक घरर बाडमुह रे गुटे गुटे आज्ञा स्टम्प सब पुता सरी जाइछे पाइप स्टम्प माने भी चालीछे. Each morning, between 8 and 9 o'clock, clean drinking water flows through the taps, installed right outside the residents' homes. The supply is more than enough for daily drinking and cooking needs. Water, which was once a source of concern, has become a blessing once again. हमको बहुत खुश लागुचे जेहेतु काम कंप्लीट हो जाइए और आम यहाँ बहुत बढ़िया पैन पाइमु बोल महानदी पैन है पाइमु बोल हमको बहुत खुश लागुचे जेते आमर आंदोलनटा हमको सार्थक है बोल जना पड़ुचे. The team barely managed to catch their breath before COVID-19 swept across the country. Migrant labour started to return to their homes in large numbers. This was the time when Rise Against Hunger India's impact on the community bore fruit. Because of these years of work that we had done on food security in the communities, this area was actually able to manage with the pandemic so well. Nobody died of hunger, nobody went out of the village to seek for food. In both the waves, they were able to manage themselves. कोविड टाइम रे किसी असुविधा नहीं थी तो आमर बहुत प्रकार अनाज थिला चौल लगी समस्ते आसले बेले मुई आमर अहिंसा क्लब और राही क्लब को देवा लगी इच्छुक अच्छे कहीं लोकर सेवार लगवा भगवान कृपार से मैंने आसले लोकर सेवार लगला ये मुझे खुशी अच्छे. However, with lockdown in place, people without land, like the Kol community, who survive on making bamboo handicrafts, were totally at the mercy of others for help. So, because the farmer producers organizations had surplus food, they were able to give that to us. So, we procured locally, we organized the kits locally, and we helped the affected communities locally. And volunteers from the club, they came together to distribute this food kit to a community. Actually, many people who were in the cities from this area, they came back and they did not want to go back. They found that they had lost this community support system. So, one group
who were master artisan and craftsmen and tailors, they came back here. In fact, we gave them seed capital to start a small tailoring unit. हम तमिलनाडु गया था, उधर काम कर रहा था। काम जब कोविड हुआ, उधर से कुछ कंपनी बंद हो गया उधर। उसके बाद उधर से रिटर्न आया। थोड़ा दिन के बाद ये कंपनी इधर चालू हुआ। उधर देख के मैं उधर काम किया। काम करने के बाद थोड़ा पैसा मिला, हम उधर रिटर्न जाना नहीं पड़ा। उसके बाद घर में सबको देख के इधर काम कर रहा हूँ। It's a proof that if you take care of the basic needs, if you create a community support system, they are good enough to withstand any pressure from outside, including the pandemic. As the lockdown ended, Rise Against Hunger India and Ahimsa Club had arranged a special surprise for the farmers, their own store to promote and market their product. इधर गांव का लोग जो मिलेट उगाते थे वो खाते थे अपने, लेकिन उसके मार्केटिंग के लिए क्या प्रिपरेशन करें, कैसे प्रोसेसिंग करके, वो कुछ मालूम नहीं था। तो इसीलिए सोचे कि हम एक मांडिया होटल करेंगे हम सब मिल के। किसान को भी पता चला कि कैसा प्रोसेसिंग करके कैसा ज़्यादा दाम में बेचते हैं, क्या क्या सब प्रोडक्ट बनाते हैं। काम भी लोगों को मिला। गांव-गांव महिला लोग भी पापड़ और अरसा पीठा जो बोलते हैं वो बना के हमको भेजने लगे। उनको भी पैसा मिला, हमको भी पैसा मिला और हमारा जो किसान है उनको भी ज़्यादा पैसा मिला। This unique outlet sources millets, rice and other grains direct from the farms. Lack of middlemen ensures that the farmers get good price for their produce. To further promote regular consumption of millets, various millet-based delicacies are freshly prepared each day. As the popularity of Mandia Hotel grows, orders are now placed from far-off cities. ये पास में एक ब्लॉक ऑफिस है जहाँ पर ऑफिसर लोग आते हैं और पहले से बोलते हैं ये चीज़ चाहिए हमें, तो हम ये सब फूड उनको ऑर्डर जितना आता है उनको टिफ़िन के लिए भी देते हैं। We had already brought communities in their journey towards achieving economic security, food security. The next big step was to take them towards nutrition security. Why nutrition security? Because body does not just need basic food. You need micronutrients, minerals, vitamins and other elements to build your immunity, give you protection. So that nutrition security was very important. And one way, solid way to achieve that is increase diversity in your food system. Since ancient times, the locals had built an impressive knowledge of forest produce, which had been passed down the generations. They could practically live off the forest in times of crisis by gathering edible plants, wild fruits, and tubers. High in medicinal properties, these amazing gifts of nature were being forgotten. आमे डायरेक्टली कंदा कुड़ी जोचू किंबा अनेक कंदा कुड़ी करी सेटा कि आमे सिजे करी खाऊछु किंबा तरकारी बने करी आमे खाऊछु से आमे जेते बेले खाला पर कि आमर देह सुस्थ रहूचे, ब्लड पूरा ताकत लागुचे, मजबूत होचे, लोग बेमार नहीं पड़न बोले करी ई कंदा कुड़ी आछु। जेन डायवर्सिटीटा अच्छे आमे जेन खाद्य रे खाऊछु आज 2, 4, 5 प्रकार जिनिस खाऊछु और सेटा कि सबुदिन ही खाऊछु, किंतु भगवान एंता जंगल रे एवं एंता नेचुराली जिनिस तैयार कर रखीचे जेनटा कि अलग अलग सीजन रे अलग अलग जिनिस मिलबा आपन को एवं अलग अलग न्यूट्रिशन, अलग अलग मीठा, अलग अलग मजा, खटा मीठा सबू ही एथिरे भर्ती हेकि अच्छे। We initiated some kind of a movement here that whatever was traditionally consumed, so we encouraged communities to revive whatever traditional knowledge they had of identifying such varieties of nutrient food which were consumed earlier. Younger generation is appreciating it and that's a beautiful thing. वो लोग भूल गए थे लेकिन अभी फिर शुरू कर रहे हैं लोग मिल के, किस टाइम में जाने से उसको ठीक टाइम में वो रूट मिलेगा, ऐसा मिल के जंगल जाते हैं और फिर उसको खुद खिलाते हैं और फिर खाना शुरू किए हैं। The time had come to cross another milestone. Ahimsa Club, with the support of Rise Against Hunger India, has set up their own mandi for millet farmers with the recognition of the local government.
ये स्पेशली मिलेट्स का मंडी है और ये गवर्नमेंट का एक TDCC है, वो लेते हैं हमारे से और हम लोग फार्मर्स को अच्छे रेट पाने के लिए ये व्यवस्था किया हूँ। भेजने के बाद 24 घंटा में उनका अकाउंट्स में वो पेमेंट उनका आ जाता है। हम लोग के चाषी मने जो पहले मड़िया चाष करते थे, पहले इधर उधर भटकना पड़ता था, कहीं दूरिया जाके बेचना पड़ता था, उचित दाम नहीं मिलता था। अभी हमारे गांव में हो गया है, नज़दीक हो गया है, इसके चलते हम लोग नज़दीक में बेच के उचित दाम मिलता है और हम लोग बेच के सब लोग चाषी मने खुशी हैं। पिछले साल हमको टारगेट दिए थे गवर्नमेंट ने 6500 क्विंटल, वो लगभग हम लोग परचेस करके अचीवमेंट कर दिए। इस साल दिए हैं हमको 5500 क्विंटल, वो भी प्रोसेस में हैं, अचीवमेंट करेंगे। Life has come a full circle. The farmers' group, of 5,000 strong members, is growing each year. There is a sense of solidarity and camaraderie. Crop failures are mostly unknown. The local organic vegetable gardens are flourishing, creating an additional source of income for villagers. If we look back at when we started, people are no more in crisis. Health indicators have improved. Nutrition indicators are changing. Migration out of distress has stopped. By building that ecosystem, by bringing farmers together, by reviving traditional system, by encouraging them to adopt millet cultivation, all these efforts that we have done, this has significantly contributed to the community's food security. Rise Against Hunger India has brought these communities to a certain level. We can use this as a pilot, we can use this as a model to take elsewhere. In fact, we have been requesting and we are taking some of their help in other pockets where we are present. So Siva is one of our resource persons, he actually has helped us identify areas and pockets and how to work. Anywhere if you go in the villages we are working, it's fighting back, aspiration, hope, ambition, that kind of an attitude, it's a big change. When people say that we don't need your assistance anymore, you just enable us with the tools, resources, capabilities, we take care of ourselves. This morning, an old tradition is being revived. Akshay Tritiya, a significant day for farmers when they take their seeds out to the fields and worship them before the next plantation. तांकर बिहन रो महत्व काना, तांकर जेन एनवायरनमेंट जेन अच्छे जेन परिवेश रो महत्व काना सब भूली जाइथिले। जेतेले आमे अक्षय तृतीया आरंभ कलु सेते लोक के या पता चलला कि प्रकृति रे बिहन रो केते महत्व अच्छे। बिहन रो जेन गुणटा, माटी रो जेन गुणटा, माटी रे जेन लक्ष लक्ष जीव जेन बंचिक रचन सही कथाटा तांकर मने पड़ला एवं से माने देखले कि जदि माटी के आमे बचामु, माटी मांगे बचामु तो आमे बंचिक रहमु, आमर भविष्य बंचिक रहबा। सेति लगी बहुत लोग आसिक आमर संगे जोड़ी करी ये कामटा के फिर के आरंभ कले। रामालय क्षण रे बुलंती आरी पारी आर माइले मंजूर होगी चित गले झाली हो धुणी रे दुए चालू तो थांदी बाट अंधा बोइले कि अंधुणी हो मो आगे कोरोनाट हो कौ अच्छी मनव शुण तु सुजनम निगार करिण सते कि बचन बचन हो गाउची हलिया गीत हो ता 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 ता